Hello, bankers. A very good morning to all of you. Welcome back. In this session, we are going to talk about unit number 22, which is RBI Act and Banking Regulation Act. Okay. So, in next 40 to 45 minutes, we will discuss the content which is part of this particular unit, right? So, now today we will talk about banking laws, which we have, where we have. RBI Act and Banking Regulation Act. Okay, so let's have a quick look about the course content in subtopics. So it is divided between two parts. Part one is RBI Act 1934. So where we have objective structure of RBI Act 1934. Chapter 1 preliminary. Chapter 2, then we have incorporation capital management in businesses. Chapter 3, we have central banking function. Chapter 4, general provision. Chapter 5, where we have penalties. Okay, so the entire act is divided among these five chapters. Then we have schedule to RBI Act 1934, right? Then second one, where we have around five schedule which are again part of this particular one. Part 2 is Banking Regulation Act 1949. So background and structure of BR Act. Then we have part 1 to 5, section 1 to 5, then section 6 to 36 A, 3 B, which is section 45Y to 45ZF. Then we have 4 and then we have 5, and this is the entire these are the subtopic which are generally part of this one, right? So if you go through the course content, so it is completely divided between two parts. First, we will talk about RBI 1934, and as we all know, RBI gets established on the basis of this particular act only, right? So RBI was established on 1st of April 1935 under RBI 1934, right? Second one is, nowadays banking companies in India, they generally govern through the Banking Regulation Act 1949. So ये दोनों ही एक्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. सो इनसे रिलेटेड आपका कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस और एरियाज जो आपको एग्जामिनेशंस के अंदर टेस्ट किए जाएंगे. सो वी विल स्टार्ट with the RBI Act 1934. So if we talk about RBI Act 1934, so it include a few major areas like these are their functions, powers. These all things are generally part of RBI Act 1934. Okay, so RBI Act 1934, it is related to establishment of RBI. So RBI was established in 1935 under RBI Act 1934. Think of it as setting up a big bank that take care of other banks and the country's money, which is known as bankers to the bank or bankers to the government of India. Main functions, the act explain the what the RBI is supposed to do. Some of its main jobs, जैसे आपका controlling money, making sure there is not too much or too little money in the economy. Basically, that is generally known as liquidity management or money supply management. Or for that, we have monetary policy. Okay, so RBI generally control liquidity in Indian economy through monetary policy. ठीक है कि at a time कितना पैसा होना चाहिए. If there will be surplus money, there will be problem related inflation, or the value of money or Indian currency will decrease. And another side आपका, if we'll have less money in our hand or in our economy, so there will be a less growth rate. So to create a win-win situations, so there are so many measures which are generally taken by RBI. Apart from this, RBI is also known as bankers to the government of India. So if let's say there are so many operations like when government of India need funds for short term, so we have treasury bills, cash management bills, and for long term like bonds and others, right? So these operations of these securities is taken care by RBI on behalf of government of India. So we have one process which is known as open market operation, right? So acting like a banker for the government, handling its money, taking care of other bank, which is also known as bankers to the bank. Okay, so making rules for bank and helping them if they need it. So अगर आपका जैसे like we have repo rate or we have bank rate, reverse repo rate, and even the supervision regulation of banking system in India, that is done by RBI. Management, the act tell us how RBI should be run, like who will be in charge and
how decision are made, ठीक है. So जो RBI का entire management है, so that is also defined under this particular one. So जहाँ पे आपका board of directors, central board of directors जिनको बोलते हैं, so where we have 21 members, ठीक है. So we'll come to those particular one also, ठीक है. Power and duties, so it give RBI special power, like printing money, deciding interest rate, which affect how much it costs to borrow money. Changes and amendments. Okay, so over time, the government has made changes to the act to help the RBI to do job better or to give new responsibilities, right? So these are some major areas which are generally part of this particular act, which is known as RBI Act 1934. Now we will go through this particular one in detail also. ठीक है, सो एक एक करके सारी चीजों को आपका डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो द जर्नी ऑफ आरबीआई दैट जनरली स्टार्टेड विद अ कमिटी व्हिच इज नोन एज Hilton Young Commission 1926. The committee was generally based on currency management in India. Okay, so it was headed by Hilton Young. So a Royal Commission on Indian Currency and Finance 1926. A Royal Commission led by Hilton Young was set up to study India's monetary system. The commission recommended the creation of a central bank to manage currency credit. Okay, so इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं RBI was get established on the recommendations of Hilton Young Commission, right? So second one is enactment of act. So it was like we passed this particular act in 1934. So finally, on the recommendation of Hilton Young Commission, this act was passed in RBI in 1934, which is known as RBI Act 1934. RBI was established on April 1st, 1935. The act provided the legal framework for functioning of the central bank with the aim of maintaining monetary stability and regulating financial system of India, right? So here we have all these 5 chapters. Now we will go through these particular one. So RBI Act is divided up into 5 chapters. तो पहले तो आपको ध्यान से रखना है इनको कौन-कौन से चैप्टर हैं इसमें, ठीक है. So chapter 1 is preliminary about the RBI. Chapter 2 is incorporation capital. इसे 5 करोड़ के साथ स्टार्ट हुआ था. आई होप everybody knows about this, ठीक है. मैनेजमेंट एंड बिजनेस. चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस. तो जिसमें आपका ABCD, you'll see these particular one, ठीक है. जैसे collection and furnishing of credit information, provision related to non-banking finance companies, prohibition of acceptance of deposit by unincorporated bodies, and regulation of transaction in derivatives, money market instrument and securities, right? So then we have apart from this we have joint mechanism and we have monetary policy, right? So these are generally part of चैप्टर 3. सो चैप्टर 3 इज ऑल अबाउट सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस. तो आरबीआई के जितने भी मुख्य कार्य होते हैं आपका वो कहीं ना कहीं गवर्न होते हैं किसके थ्रू? आपका चैप्टर 3 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, राइट? चैप्टर 4 इज जनरल प्रोविजन एंड चैप्टर 5 इज रिलेटेड टू पेनल्टीज. ओके, सो जैसे कोई भी बैंक आपका जो भी गाइडलाइंस उनको अगर फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है, या इवन while preparing their final accounts if they are doing some kind of malpractices. So these things are generally governed through this particular one, ठीक है. So intentionally और unintentionally अगर कोई भी ऐसा गलती होता है, जैसे like there is clearly mention कि आपका 3 साल तक की जेल या मॉनेटरी पेनल्टी, ऐसा बहुत कुछ जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन. एक स्नैपशॉट आपको मिलेगा अबाउट द आरबीआई एक्ट. सो देयर आर फ्यू एरियाज व्हिच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो इन नेक्स्ट 10 मिनट आई विल रिवाइज दीज पर्टिकुलर एरियाज with the help of Macmillan book, right? चलो, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें चैप्टर 1 की, ठीक है, सो इट इज प्रिलिमिनरी, जिसमें आपका सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सेक्शन 1, दिस एक्ट विल बी कॉल्ड आरबीआई एक्ट एंड विल बी वैलिड फॉर होल ऑफ इंडिया. तो पूरे देश भर में इसको आपका जहां से वैलिडेशन दिया गया, ठीक है, आरबीआई एक्ट के नाम से. डेफिनेशन सेक्शन 2E, सबसेक्शन E, शेड्यूल बैंक मींस अ बैंक इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI Act 1934. So these two things are generally part of your chapter 1. Chapter 2 is incorporation of capital, management of RBI and businesses, right? So here we have section 3, आपका establishment and incorporation of RBI. So a bank to be called RBI shall be constituted for the purpose of
taking over the management of currency from the central government and of carrying the business of banking in accordance with provision of the act आपका ठीक है तो जो आरबीआई को अधिकार आपका दिए गए कि मतलब इस जब ये एक्ट पास किया गया तो उसमें क्लियरली बोला गया कि वी विल स्टेब्लिश अ सेंट्रल बॉडी which will be known as RBI Act and that body will be responsible for management of currency and to manage the business of banking in India, right? Bank shall be a body corporate by name of the Reserve Bank of India having a perpetual succession and a common seal. ठीक है, so perpetual succession is जैसे होता है ना कि डेथ ऑफ प्रोपराइटर डज नॉट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द कंपनी सो सेम यहाँ पे भी so it is kind of it's a going concern concept and common seal it is a signature of RBI जैसे RBI का होता है ना common seal आपका ठीक है so which it is an artificial person so it cannot sign its name so to present that particular one we have a common seal ठीक है RBI का जो आपका रहता है ठीक है so section 4 आपका capital of RBI so initially it was 5 crore rupees the capital of Reserve Bank of India shall be 5 crores आपका डिवाइडेड बाय 100 और 10 पर शेयर आपका जो रखा गया था इन ऑल बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो इसलिए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है दिस इज पेड अप कैपिटल ऑफ आरबीआई एंड इट मे बी नोटेड दैट as per the annual report of RBI as on 31st March 22 the total reserve of RBI stood at this 6,741 करोड़ और इसी रिजर्व में से कई बार वो आपका गवर्नमेंट को डिविडेंड आपका डिस्ट्रीब्यूट करते रहती है जैसे अभी कुछ दिन पहले आपका किया गया था राइट सेक्शन 7 and 8 अबाउट द मैनेजमेंट एंड द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई टीम ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशंस के लिए आपको हेल्प करेंगे द जनरल सुपरिटेंडेंट एंड डायरेक्शन ऑफ अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ बैंक मींस यहाँ पे आरबीआई की बात हो रही है आर इंटरेस्टेड टू अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट ठीक है तो आपका जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको हम लोग बोलते हैं विच इज जो आरबीआई टीम आरबीआई के नाम से भी इसको जाना जाता है ठीक है सो इसका जो फॉर्मेशन है दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 7 and as per this section there are 21 members which are generally part of this particular one ठीक है जिसमें आप which is headed by RBI governor 4 deputy governors 2 member from ministry of finance 10 member from government of India and 4 member from local board offices इस तरीके से जो डिवीजन आपका रहेगा ठीक है however the board has abide by any directions that may be given by central government after consultation with governor of our Reserve Bank team, governor of the bank. Such direction can be given from time to time in public interest. Central board shall consist governor, not more than 4 deputy governors at a time. Team. So governor, 4 deputy governor, 5 आपका होगा ठीक है. To be appointed by the central governments and other directions to be nominated by other directors to be nominated by central government. ठीक है. So 4 directors to be nominated by central government, one each from local board offices. तो आरबीआई के जो 4 लोकल बोर्ड ऑफिसेज हैं दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई तो वहां के एक एक आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होगा ठीक है अंडर सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट 10 directors to be nominated by central government from various fields ठीक है so again and 2 government officials to be nominated by central government amendment 2012 the governor and deputy governors are whole time ऑफिशियल मेंबर ऑफ द बैंक तो इस तरीके से ये टोटल कितने हो जाते हैं आपका 21 मेंबर्स जिनको हम लोग टीम आरबीआई के नाम से भी जानते हैं सो शेड्यूल सेक्शन 7 and 8 जहां पे इनके ऊपर बात किया गया नेक्स्ट वन वी हैव section 9 so section 9 of the act deal with the detail of local board and member of the local board ठीक है सो जैसे जो लोकल बोर्ड ऑफिसेस हैं दिल्ली मुंबई कोलकाता एंड चेन्नई तो इनसे रिलेटेड आपकी जो बोर्ड आपका होगा और उनकी जो मेंबर्स होंगे दैट इज generally governed through the section 9 of RBI Act 1934 a local board shall be consist for each of the 4 geographical territories which are specified in the first schedule of the act and shall consist 5 members to be appointed by central government itself these members will represent as far as possible territorial and economic interests and the interest of cooperative and indigenous banks so then we have section 11 removal from office right so the central government may remove
from office the governor and deputy governor or any other directors or any other member of local board. ठीक है, so ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, तो ध्यान रखें। तो जो गवर्नर हैं या डिप्टी गवर्नर्स हैं, दे कैन बी रिमूव बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर दी सेक्शन 11 प्रोविजंस। ठीक है, सो सेक्शन 13 आपका मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, तो एटलीस्ट कितने बार होने चाहिए, 6 टाइम इन अ ईयर। ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन होगा, मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड shall be convened by the governor at least 6 time in each years and at least once in a quarter। ठीक है, सो आपका पूरे साल भर में आपका 6 बार और हर एक क्वार्टर में एटलीस्ट एक बार, आपका 4 क्वार्टर होता है, 4 में एक एक बार आपका होना जरूरी है, और ओवरऑल आपका डाउन साइड 6 टाइम होना जरूरी है। गवर्नर और if for any reason he is unable to attend, the deputy governors authorized by the governor to vote for him shall preside at meeting of the central board, and in the event of an equality vote shall have a second vote or casting vote। ठीक है, तो जैसे आपका मॉनेटरी पॉलिसी की मीट्स होती है, अदर्स कोई भी ऐसा कोई भी जनरल इशू के ऊपर मीटिंग हो रहा है, सो इफ देयर इज अ टाई वोट, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आरबीआई गवर्नर विल हैव ड्यूल वोट राइट। ठीक है, तो उसका उन्होंने जिस तरफ भी आपका वोट किया है, सो दैट विल बी द डिसीजन इन केस ऑफ टाई वोट। ठीक है, ये मॉनेटरी पॉलिसी में काफी यूज होता है। सेक्शन 17 बिजनेस परमिटेड टू बी कंडक्टेड बाय आरबीआई, तो जिसमें आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट विदाउट the business that can be undertaken by RBI include the following: acceptance of deposit without interest from central, state government, banks, local authorities and any other person, institution। होता है ना, जैसे like bank they have to deposit CRR with RBI, so that is without interest only, right? So these kind of deposit which RBI can take from the bank itself। Section 18A, validity of loan not to be questions, so notwithstanding anything to the contrary contained in any of law for the time being in force, the validity of loan or advances granted by RBI in pursuance of provision of RBI Act shall not be called in questions। ठीक है, तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं उठा सकता है, आरबीआई को पावर देगा, merely on the ground of non-compliance with the requirement of such other laws or any resolutions, contract, मेमोरेंडम, आर्टिकल, एसोसिएशन और अदर इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो अगर वो किसी और एक्ट के अंदर आपका ना आ रहे हो तो उसके लिए। सेक्शन 19 आपका बिजनेस दैट आरबीआई कैन नॉट ट्रांजेक्ट, तो दीज आर सम एक्टिविटीज विच आरबीआई कैन नॉट डू, तो जैसे आपका engage in trade or otherwise have a direct interest in any commercial, industrial or other undertaking। Second one is purchase of shares of any banking company or of any other company or grant loan upon the security of such shares, advance money on mortgage of or otherwise on the security of or immovable property or documents of title relating thereto, or to become the owner of immovable property, make loan or advances, ठीक है, draw or accept bill payables otherwise than on demand, allow interest on deposit or current account। So again this is very important part here। So these are some functions which RBI कैन नॉट ट्रांजेक्ट। आपका ये कुछ मेजर एरियाज आपका जिनमें आरबीआई डील नहीं कर सकता। ठीक है, सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 3 आपका विच इज रिलेटेड टू सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस, तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो सेक्शन 20 बैंकर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो आरबीआई जो बैंकर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे जो एक्टिविटीज हैंडल करता है। ठीक है, सेक्शन 21 सबसेक्शन ए बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स। सेक्शन 22 राइट टू इशू बैंक करेंसी नोट। ठीक है, तो जो करेंसी नोट आपके इशू होते हैं रुपीज 2N अब आपका जो भी डिनोमिनेशन केस होते हैं जनरली गिवन अंडर दिस पर्टिकुलर वन आपका। ठीक है, इसके अलावा जैसे डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी नोट, जैसे इंडिया में आपका 10,000 है और उनका जो फीचर्स इन एवरीथिंग दैट इज जनरली पार्ट ऑफ दिस वन। ठीक है, लीगल टेंडर कैरेक्टर ऑफ करेंसी नोट, पेपर वाला एंड अदर थिंग्स, सो ये इंपॉर्टेंट। बैंक every bank shall be a legal tender at any place in India in payment for the amount expressed therein and be guaranteed by the central government,
On recommendation of the Central Bank of RBI, the central government may declare that with effect from such date as may specified, any series of banknote of the denomination shall cease to be legal tender except at such office of RBI and such extent as specified in the notifications. ठीक है, ये आपका जो रहेगा नहीं. इसके अलावा डिनोमिनेशन में आपका डिनोमिनेशन ऑफ 2 रुपी नोट्स, 5 रुपीज नोट, दिस ये आपका 10,000 इज द अपेक्स वन. ठीक है, सो 5,000 इन 10,000 रुपीज, ये सारे डिनोमिनेशन दैट इज डिफाइंड बाय द आरबीआई. ठीक है, रीइश्यू ऑफ नोट नॉट टू बी डन. So RBI shall not reissue bank note which are torn, defected or excessively solid. ठीक है, तो आपका सेक्शन 27 फटे हुए नोट या अदर्स वो सब. ठीक है, 28 recovery of lost, stolen or mutilated and imperfect note. ठीक है, सो रिकवरी आपका जैसे बैंकों की तरह ही जनरली होते हैं, जैसे कोई आपका नोट फटा हुआ कस्टमर आपका डिपॉजिट कर रहा है, सो आरबीआई विल रिकवर दैट पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो बैंक विल कलेक्ट एंड बैंक विल डिपॉजिट टू आरबीआई, देन आरबीआई क्या करेगा, उसको खत्म करके उनके रिप्लेसमेंट में नया करेंसी लेके आएगा. नो पर्सन सेल एज मैटर ऑफ राइट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर from the central government or RBI value of any lost, stolen, mutilated or imperfect currency note of Government of India or bank notes. However, RBI may with the previous sanction of central government prescribe the circumstances subject to which the value of such currency note may be refunded. Okay. Section 29, currency note exempted from stamp duties. Section 30, power of the central government to supersede the central board of RBI. ये this is again very important. Section 30 आपका. ठीक है, सो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट आपका जो आरबीआई का बोर्ड है उसको क्या कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है, और दे कैन हैव लाइक उनके राइट्स उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ सकते हैं. इफ इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट the RBI failed to carry out any of the obligation imposed on it by under this act, the central government may be a notification. The central government may by notification in the Gazette of India declare the central board to be supersede. Thereafter, the superintendents, general superintendents and direction of the affairs of RBI shall be entrusted to such agency as the central government may determine, and such agency may exercise the power and take all actions as may have been exercised by the central board of RBI under this particular act. So simple से अगर हम इसको brief out करते हैं, ठीक है, so section 30 आपका जहाँ पे गवर्नमेंट के पास राइट है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे डू हैव दैट पर्टिकुलर राइट. सो वो आपका अगर लाइक कहीं पे उनको लगता है कि दैट्स बोर्ड इज नॉट वर्किंग और एक्ट के हिसाब से जो चीजें हैं वो चीजें आपके नहीं हो रही है, ठीक है, सो दे कैन डिसॉल्व द बोर्ड, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, एंड दे कैन कम अप विद न्यू एजेंसी, और उसके राइट वो आपका दे कैन शिफ्ट टू द न्यू एजेंसी फॉर अ टाइम बिंग. ठीक है, एसेट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट्स. So assets of the issue department, so which is defined under section 33. So I'll share this particular PDF also, तो जहाँ पे भी आप थोड़ा सा इनको देख सकते हैं. Chapter 4 आपका which is general provision, जिसमें section 48 exemption of RBI from income tax and super tax. ये again बहुत important है. So notwithstanding anything contained in Income Tax Act 1961 or any other enactment for the time being in force relating to income tax and or super tax, the RBI shall not be liable to pay income tax or super tax on any of its income, profit or gain. ठीक है, so RBI is not a subject matter of tax under Income Tax Act. Section 49, publication of the bank rate. RBI shall make public from time to time to standard rate at which it is prepared to buy or rediscount bills of exchange or other commercial paper eligible for purchase under this particular act, जैसे आपका bonds, treasury bills and others. Section 59, liquidation of RBI. ठीक है, so nothing in the Companies Act shall apply to the RBI, and RBI shall not be placed in liquidation except by order of the central government and in such manner as it may direct. ठीक है,
तो आरबीआई मतलब कंपनीज एक्ट विल नॉट अलाउ और नॉट एप्लीकेबल फॉर आरबीआई लिक्विडेशन इन एनी सर्कमस्टेंसेस. इट इज totally in the fate of central government. Okay, so central government, they do have that particular right because they are the only owner for this particular agency, right? So that is the one. Chapter 5 आपका penalties, final chapter आपका है. So this chapter deal with various type of penalties which may be levied on any person or entity that breaches the provision of act. These include providing wrong information, failure to produce a required book and records, disclosure of any confidential information, etc. Penalties for such breaches can extend from monetary fine to up monetary fine or up to 3 year of 3 year in prison. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर 5 जहाँ पे आपका जैसे बैंकों को दे हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट्स, and if they are doing some kind of malpractices, or we can say there are some errors in those particular book which is intentionally or unintentionally, so that is a subject matter of penalty, and penalties are generally defined under this particular one जहाँ पे monetary भी आपकी रहेगी और साथ साथ में आपका जो आपका जो imprisonment है वो भी आपका यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, सो शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल आपका, वी हैव 5 शेड्यूल्स, ठीक है, सो उनके ऊपर जल्दी से आप एक बार बात कर लेते हैं. द शेड्यूल ऑफ आरबीआई Reserve Bank of India Act 1934 provide additional detail and specification that complement the main provision of this particular act जो अभी तक हमने पढ़े थे. ठीक है, so we have like first one is आपका there are अच्छा ओके हाँ there are 5 schedules, तो these are the 5 schedules. ठीक है, तो जिसमें आपका फर्स्ट ओथ ऑफ डायरेक्टर शेड्यूल 1, आपका जो डायरेक्टर्स हैं उनकी ओथ. सेकंड आपका ओथ ऑफ लोकल बोर्ड एंड कमिटीज, provision for issue departments, then we have provision for banking departments, and fifth one is provision for amending the act आपका. ठीक है, तो पहला जिसमें शेड्यूल 1 form of oath of directors. This schedule provide the exact wording of the oath or affirmation that the directors of RBI must take before the assuming their duties. It's a promise to do their job honestly and faithfully. ठीक है, तो यहाँ पे आपका उनका क्या आता है, oath of directors. Second आपका oath for members of local board and local committees. So similar आपका इसमें भी टीम similar to schedule 1. This schedule outline the wording of the oath or affirmation for the members of local board offices जो भी वहाँ पे अपॉइंट हुए. Schedule 3 आपका provision of the act applicable to issue a department. This schedule detail specific rules and provisions that apply to issue departments of RBI. Issue department is responsible for issuing or giving out currency note. तो उनसे related सारे do's don't आपका जो यहाँ पे मिलेंगे. ठीक है, provision schedule 4 आपका provision of act applicable to banking departments. So this schedule outline the rule and provisions that apply to banking department of the RBI. The banking department handles various banking functions including acting as a bankers to the government of India. Schedule 5 final one, provision for amending the act. This schedule include a provision that allow for changes or amendments to the act. It set out the process and conditions under which the act can be modified. So ये आपका सारे शेड्यूल जो इसमें रहेंगे. ठीक है, so these are 5 schedules which are part of RBI Act 1934 और उसमें इनका जो स्पेसिफिकेशन और जो डिटेल्स आपको यहाँ पे इसी तरीके से देखने के लिए मिलेंगे. ठीक है, now next one we have part 2 which is Banking Regulation Act 1949. So BR Act 1949 which is अगर हम लोग इसकी बात करें, ठीक है, so bank what they can or cannot do and make sure they work in a safe and fair way. So these are, it is all about the supervision and regulation of banks in the country, right? So जहाँ पे आपका application of banks, ठीक है, so this act applies to all banking companies in India. It helps to make sure that all bank follow the same rule. Licensing of bank need a specific permission which is licensed to operate. This act
act explain how bank can get this license and what they need to do to keep it, right? So आपका licensing कैसे होगा और आपका उस लाइसेंस को मेंटेन करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, या जो डूज एंड डोंट है वो सब। रेगुलेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन, दिस पार्ट टेल बैंक हाउ दे शुड डू देयर डेली वर्क like acceptance, deposit, lending money, and other banking services, right? Central and control and supervisions. The act give the RBI the power to watch over a bank and make sure they are following the guidelines, rules, regulation. If a bank does not doing something right, the bank can step in and fix it. Winding up or mergers. Sometimes a bank might need to close down or join with another bank. So this part explain how that should happen, and it is in a proper or ordinary way. Okay? Then we have penalties. If a bank break the rules, this part explain what kind of punishment or penalties it might face. ठीक है, तो ये कुछ आपके अलग अलग पार्ट्स में जो आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जहां पे अगर हम लोग बात करें, ओरिजिनली वी हैव 56 schedule. ठीक है, सो द ओरिजिनल एक्ट हैज 56 सेक्शंस contained in 5 parts and 5 schedules. Same. So silent features आपका जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया, a comprehensive definition of banking, आपका prohibition of non-banking companies, prohibition of trading to eliminate non-banking risk, इसके अलावा prescription of minimum capital standards, ठीक है, limiting the payment of dividends, inclusion the scope of legislation of banks registered outside the provinces of India, introduction of comprehensive system of licensing of bank, और आपका prescription of special form of balance sheet and confirming of power on the RBI to call for periodical returns, inspection of book and account of a bank, empowering the central government to take action against a bank conducting their affair in a manner that detrimental to the interest of the depositors, provision for bringing Reserve Bank of India into closer touch with banking companies, winding up power of the Reserve Bank of India so as to enable it is to come support of banking companies in the emergencies, right? So ये कुछ आपका मेजर सेक्शंस या साइलेंट फीचर्स आप जो बोल सकते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के लिए, ठीक है। So the structure of the act is divided into various sections. So where we have 56 sections, each dealing with the specific aspect of banking regulation. So जिसमें आपका section 1, अगर हम लोग उनको जल्दी से देखें, टाइटल, extent and commencement of banking company. Section 2 should आपका which is definition, 3 to 6 application, 7 to 11 आपका capital regulations, banking operations which is defined under 12 to 19, 20 to 30th आपका control over management, 31 to 35 accounts and audits, special provisions 36 to 46 and miscellaneous आपका 47 to 56। तो ये पूरा एरियाज आपका जहाँ पे बैंकिंग लॉ, ठीक है। सो जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपका जो शेड्यूल है या जो सेक्शंस हैं जिनके बारे में मैंने आपके लिए थोड़ा छोटे छोटे नोट्स भी आपका बनाए, तो जिनको भी हम लोग एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सो द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 गवर्न ऑल बैंकिंग ऑपरेशन इन इंडिया. It set the legal framework for banking in India and provide guidelines for all matter related to banking. जैसे हमने इन सारे शेड्यूल के अंदर आपका देखा, ठीक है, या ये जो आपका एक लिस्ट आपका कंप्लीट था, सो दैट इज related to these particular one only, right? इसके अलावा the act empowered the Reserve Bank of India to issue license and directive to banks and provide instructions on matters such as opening of new branches, maintaining cash reserve, etc. These powers allow the RBI to effectively regulate the banking industry and ensure its smooth and functioning, right? Next हमारे पास section 35 of Banking Regulation Act 1949 जो बहुत बार पूछा जाता है, allow Reserve Bank of India to undertake an inspections of any bank
Banking Regulation Act 1949 is the legislation in India that regulates the system. तो सेक्शन 35 आपका जिसके तहत आरबीआई कैन कंडक्ट इंस्पेक्शंस ऑन एनी बैंक इन इंडिया, राइट. सो ये आपका इस तरीके से, एंड दैट कॉस्ट इज जनरली बेयर बाय द बैंक इटसेल्फ. सेक्शन 35 of this particular act authorize RBI to undertake inspection of any bank. This thing. So to ensure that affair of bank are being conducted in the interest of the depositors, and that the bank are in position to pay its present or future depositors in full as their claim occurs. ठीक है. तो ये आपका इंस्पेक्शंस का जो मेजर ऑब्जेक्टिव आपका रहता है. सेक्शन 5 जहां पे आपका मीनिंग है बैंक का, ठीक है, सबसेक्शन बी सबसेक्शन 1. सो मीनिंग मींस दैट एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग. ये हमने अपने पिछले उसमें भी डिस्कस किया था, ठीक है. सेक्शन 22 करेंसी से रिलेटेड आपका हमने डिस्कस किया था, ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव सोल राइट टू इशू आपका इशू अ बैंक नोट इन इंडिया. सो इट इज आरबीआई एक्ट, सॉरी, हाँ, इट इज आरबीआई एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, सेक्शन आपका 22. सेक्शन 25 अगेन आरबीआई एक्ट, स्टेट दैट डिजाइन from and material of bank notes shall be such as may be approved by the central governments, right. Section 21 of the act allow RBI to control loan and advances extended by banking companies. RBI may issue directions in respect of the following banking companies, and every banking company has to necessarily comply with these particular directions. Again, very important one. ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें. टू स्पेसिफाई द पर्पस फॉर विच एडवांसेस मे और मे नॉट बी मेड, ठीक है, कहाँ पे आप दे सकते हैं, कहाँ पे नहीं दे सकते, ये सब डिसाइड करेगा आरबीआई. द मार्जिन टू बी मेंटेन इन रिस्पेक्ट ऑफ secured advances, the maximum amount of advances that can be made to a particular company, मतलब basically exposure limit आपका, ठीक है. The maximum amount of guarantee that can be made by banking on behalf of particular company and others. So these are some areas which are generally governed by RBI. In regard to cash reserve, the provision of section 42(1) RBI Act 1934 govern schedule urban cooperative banks. Non-scheduled urban cooperative banks are governed by the provision of section 18 of the banking regulation act. ठीक है, तो जो आपका section 42(1) सबसेक्शन 1, जिसमें आप बेसिक अगर हम लोग बात करें जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उनसे रिलेटेड प्रोविजंस, और जो आपका नॉन शेड्यूल है उनसे रिलेटेड जो प्रोविजंस डिफरेंट एक्ट. सेक्शन 2 द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ऑन supersession of the board of directors. So which of the following statement about the history of RBI are correct? So we have to find out the correct statement. So the idea of central bank for India was first proposed by the Royal Commission on Indian currency, which was headed by Hilton Young. So in 1926, so first statement is true, 100%. The RBI was initially established as government-owned entity. No, it was a private entity. With a paid-up capital of 5 crore rupees. This is true. But the first part is wrong. That means this statement is incorrect. The RBI served as central bank for both undivided India and Burma until 1947. No, it is 1942 only. So 1942 for Burma, it was 1942. Okay, so that means this statement is also wrong. After India's independence, RBI continued to function as a Pakistan Central Bank until 1948. True. The nationalization of RBI took place on 1st January 1949 under RBI Transfer of Public Ownership Act 1948. This I have already told you in our previous session also. Sometimes people they get confused with BR Act and all. No, that is not the case. So RBI got nationalized through RBI Transfer of Public Ownership Act 1948. That means this is also true. So 145, that means option D will be right answer for this particular one. So only two statement was incorrect. One is RBI was initially private bank, not a government owned entity. So it get nationalized through RBI Transfer of Public Ownership Act 1948.
The another statement which was wrong, that is the RBI served as central bank for undivided India till 1942, not 19, whatever the mention was 1947 or something. Okay. Rest statements are correct about the RBI. Next one. A bank is classified as scheduled bank if it is included in which schedule of RBI Act 1934. So this is again like इसका discussion हम बहुत बार कर चुके हैं. तो second schedule of RBI Act 1934. ठीक है. So second schedule which asks bank to maintain certain additional capital, and those who are scheduled banks, they are eligible to borrow money from RBI and all. Okay, so there are some provision of that second schedule that they have to meet, and if they meet those particular one, they have some advantages also. All right. Next one. Which of the following statement regarding management and governance of RBI are correct? Okay. So what will be your correct answer? See, now you have six statement about the governance of RBI itself, right? So the Central Board of Directors are responsible for the general superintendence and direction of RBI affairs. So first statement is correct. Okay. So first statement, without any doubt, it is right. The central government can give direction to RBI board in public interest after consulting the RBI governor. This is also true. The RBI governor and deputy governors are appointed for a fixed term, not exceeding not 4 years. It is 5 years. 5 years, and are eligible for reappointment. So that 4 year make this statement incorrect. It is 5 years. The central board consists of governors up to 4 deputy governors and directors nominated by central government. This statement is 100% right. The tenure member of local board is not 5 year, it is 4 years, and can be extended for 2 additional years. This make this statement incorrect. 5 government officials are nominated by central governments under the 2012 amendments. So this statement is also wrong. So not 5 members, it is 10 members. So if we talk about the central board of RBI, so it has like total numbers are 21. So out of 21 members, 10 members are nominated by Government of India. So like governor, 4 deputy governor, 4 persons from local board offices, 2 members from Ministry of Finance, and 10 people are nominated by the Government of India. So total 21, right? So not 5, it is 10. So this is also incorrect. So हमें ढूंढना था correct statement 1, 3 and 4. So 1, 3 and 4. 1 okay. So 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. हाँ. So option A only will be right answer for this particular one. ठीक है. तो यहाँ पे 6 आपका ये incorrect क्या था? Amendment nominate of 2 government officials to RBI central board. ठीक है. So it is something related to Ministry of Finance, जितना मेरे को लग रहा है. ठीक है. Incorrect आपका. ठीक है. Local board officers appointed for 4 years, not for 5 years, and RBI governors, they generally get appointed for this, and this is 2 members. Sorry, 2 members are nominated from आपका government, so it is 5, 10, 10. Okay, so we have to check this statement, otherwise like not 5, that I am 100% sure. Next one. As per the section 4 of RBI Act 1934, what is the paid up capital of RBI? So it was 5 crore rupees, and these 5 crore rupees are divided among 100 rupees shares, and all shares belongs to Government of India when we founded this RBI. Okay? So as per the section 4 of RBI Act, the paid up capital of Reserve Bank of India is fixed 5 crore. This does not change even if RBI total reserve increased. Okay? And all these shares belongs to Government of India. Meeting of the central board shall be convened by a governor at least dash time in each year. That means 6 time in each years. At least once in a quarter. Okay? So 6 and 1. That means option B will be right answer for this one. तो जो RBI के central board की जो meetings है, ठीक है, for that one, it should be conducted at least 6 time in a year,
and one at least once in a quarter, right? Downside आपका, ठीक. So meeting of the central board shall be convened by the governor at least 6 times each years and at least once in a quarter. The governor shall presides over the meeting and is in the event of equality of vote shall have second vote or a casting vote. So that means, like, let's say if we are discussing some issues and in that particular one, let's say if we have a tie vote, again, six, like let's say आधे members आपका yes, आधे members no आपका 50-50 situation. In that situation, RBI governor will have two vote right. तो उन्होंने अगर yes की side vote किया है तो उनको एक एडिशनल वोट आपका वहां पे दिया जाएगा, ठीक है. सो दैट इज द वन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन. जैसे मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर आपका यूजुअली कई बार ऐसा, आज तक अभी ये वोट का यूज हुआ नहीं, बट लाइक इफ the situation is, let's say 3 members in monetary policy committee who belongs to government of India, they want to increase liquidity. 3 members who are part of RBI, which is RBI governor, executive director or deputy governors, let's say. So अगर tie vote होता है तो in that situation RBI governor vote will be counted as dual vote and जो decision होगा वो इनके favor में आपका होगा, ठीक है. Next one. Which of the following statement are correct with respect to the provision mentioned in RBI Act 1934? So अब यहाँ से आपका जो एक्ट है, ठीक है, पार्ट 1 which is RBI Act. So with this particular question we are going to discuss all those particular one, and we have discussed these particular one in our concept classes also, but I'll quickly revise you, right? So the central government on the recommendation of Central Board of RBI can specify a currency denomination up to 20,000. No, this is wrong. कितने तक का करेंसी नोट है इंडिया में आपका? 10,000 तक का, ठीक है. सो 10,000 एंड इन केस ऑफ कॉइन इट इज मैक्सिमम आपका 1,000, ठीक है. इस तरीके से आपका रहेगा. RBI is exempted from paying stamp duty on banknote issued by it under the Indian under the, हमें क्या ढूंढना है इसमें आपका correct statements we have to find out. So RBI exempted from the paying stamp duty on banknotes issued by it under the Indian Stamp Act 1899. This is 100% true. No person is entitled to buy or sell foreign exchange of value less than 2 lakhs. No person is entitled to buy or sell foreign exchange of a value less than 2 lakh. Foreign exchange a value of less than 2 lakh. This is also correct. Minimum आपका value and maximum it is 2,50,000 per financial year actually. Scheduled banks are required to maintain CRR. CRR. No person entitled to buy or sell foreign exchange of a value less than. Okay, I'll check this one. Scheduled banks are required to maintain CRR with RBI as a percentage of their demand and time liabilities in India. This is 100% true. इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज नहीं आपका NDTL, हाँ दिस इज ट्रू, ठीक है. नेक्स्ट वन आपका द एक्ट स्पेसिफाइज अ मिनिमम एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ CRR टू बी मेंटेन बाय शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है. इट इज डिसाइडेड बाय RBI, ठीक है, एंड विच इज चेंजेबल, ठीक है. ये आपका जो चेंज होता रहता है. So this is wrong, ठीक है. तो what will be our correct answer for this one? This is wrong, ठीक है. This is true. No person. हाँ, this is true. ठीक है. आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है. अच्छा ओके, सेकंड से एक ही स्टेटमेंट है हमारे पास. सेकंड, थर्ड, फोर आपका, ठीक है. सो D should be right answer for this particular one. Yes. So statement 1 was incorrect. RBI Act allow the central government to specify no denomination of 10,000, ठीक है. आपका so it is a like kind of maximum currency denominations, ठीक है. जैसे 10,000 का पहले था भी एक समय में आपका, ठीक है, 5,000, 10,000, then they get demonetized. Statement 2 was correct, 3 was correct, 4 was correct, schedule 3 was correct. No person is entitled to buy or sell foreign exchange of value less than 2 lakh, ठीक है. And there's demand in time liabilities of like just the current CRR is 4%, so they have to maintain 4% of their DTL with RBI in the form of cash. And fifth one was incorrect.
RBI does not specify the RBI Act does not specify any minimum or maximum percentage of CRR. It is decided by the RBI itself through the monetary policy means. Okay, next one. XYZ Bank, a scheduled commercial bank, was recently investigated by the Reserve Bank of India for regulatory violations. So during the investigation, it was found that the bank had failed to provide required book and records for inspections. Additionally, some of the officials were found to have disclosed confidential customer information without proper authorizations. As a result, RBI decided to impose penalties based on Chapter 5 of the RBI Act. What type of penalties can XYZ Bank and its official face for these violations? ठीक है, सी जो बैंकिंग के अंदर आपका जो भी पेनल्टीज है, ठीक है, सो पेनल्टीज ऑन बैंक्स they are generally mentioned under Chapter 5 of RBI Act 1934, and it has like two major provision. One is monetary penalty, another one is imprisonment up to 3 years. तो 3 साल तक की जेल आपका हो सकती है, और दूसरा उनके ऊपर आपका मॉनेटरी पेनल्टी आपका होगा, ठीक है. सो अ मॉनेटरी फाइन एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 3 years, पहला ही 100% आपका करेक्ट है. जस्ट डू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर वन, एंड द सेम थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन आवर AFM सेशन एज वेल, ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा. सो चैप्टर 5 ऑफ द RBI एक्ट आउटलाइन पेनल्टीज फॉर breaches such as failing to produce required records and any manipulation with the records intentionally or unintentionally, disclosing confidential information. These penalties may include monetary fine, in served cases imprisonment up to 3 years also there. ठीक है, सो ये थोड़ा सा एक बार इनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है. दिस पार्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, एंड सो मेनी टाइम व्हाट आई हैव सीन कि जैसे इस पूरे मॉड्यूल के मार्क्स 1 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, कई बार वो हाफ मार्क्स में आपको छोटी छोटी चीजें आपका पूछ रहा होता है. सो यू हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो चैप्टर 1 which is preliminary, where we have section 1 and 2. Section 1, which is this act will be called Reserve Bank of India Act, and will be valid for the whole of India. ठीक है, तो section 1 of RBI Act 1934, which is something related to कि this act is on about the overall functioning of RBI itself. एक्ट का नाम दिया गया RBI Act 1934, and it will be applicable all around India. ठीक है, पूरे देश भर में लागू होगा. ठीक है. सेकंड आपका डेफिनेशन, सेक्शन 2 सबसेक्शन ई, शेड्यूल बैंक आपका, ठीक है, मेन बैंक इंक्लूडेड इन सेकंड शेड्यूल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. ठीक है, और जिनका जो डेफिनेशन आपका है दैट इज सेक्शन 5, जहां पे बोरोविंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग जो आपको देखने के लिए मिलेगा. सो चैप्टर 1. चैप्टर 2 आपका जहां पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कैपिटल, मैनेजमेंट एंड बिजनेसेस. ठीक है, सो सेक्शन 3 स्टेब्लिशमेंट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ RBI. ठीक है, सो अ बैंक to be called RBI shall be constituted for the purpose of taking over the management of currency for the central government, and of carrying on the business of banking in accordance with provision of this act. The bank shall be a body corporate by the name of Reserve Bank of India, having perpetual succession and a common seal. Perpetual succession and common seal मतलब ये कॉर्पोरेट बॉडी है, काइंड ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. ठीक है, सो परपेचुअल सक्सेशन इज लाइक डेथ ऑफ प्रोपराइटर इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट द लाइफ ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये चलता रहेगा. ठीक है, कोई किसी स्टेक होल्डर्स की डेथ से इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. कॉमन सील विच इज अ काइंड ऑफ सिग्नेचर. ठीक है, RBI का जो स्टैंप होता है, मोहर होता है, विच विल रिप्रेजेंट RBI इन इंपॉर्टेंट केसेस. ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या अदर्स एग्रीमेंट्स यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. Section 4 capital, it is 5 crore rupees. The capital of bank shall be 5 crore. This is a paid up capital of RBI, and it may be noted that as per the annual report of RBI 31st March 22, the total capital reserve of stood at this. So ये reserve, this generally like sometime I hope you guys heard about कि RBI transfer this much of dividend to government of India.
तो दैट इज द रिजर्व. कैपिटल विल स्टैंड आपका सेम 5 करोड़ रुपीस के ऊपर आपका. ठीक है. सेक्शन 7 एंड 8 मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बोर्ड, तो जिसमें अभी हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे. ठीक है. A general superintendent and direction of affairs and business of bank are interested in the central board of directors. Section 7 of this act. Okay. However, the board has abide by any directions that may be given by central government after a consultation with the governors of the bank. Such direction can be given from time to time in the public interest. The board of directors shall consist governor, not more than 4 deputy governors to be appointed by the central government, and other directors to be nominated by the central government. ठीक है. तो जिसमें आपका 4 directors to be nominated by central government, one each from a local board offices जो आपके होते हैं. ठीक है. Section 9 of this act. 10 डायरेक्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन वेरियस फील्ड आपका. ठीक है. ये मैं आपको बात कर रहा था उस समय. ठीक है. सो लाइक वी हैव 21 members, governor, 4 deputy governors. ठीक है. Then 4 persons from local board offices. Usually they are head of those 4 local board offices. Then 10 members are nominated by our government of India from different fields or with their different expertise. Two government official nominated by central government. Again आपका ये जो amendments है, usually it is belongs to finance, जो ministry of finance होता था वहां पे, अभी इसको इस तरीके से रखा गया. ठीक है. So the governor and deputy governors are whole time official of this particular bank. ठीक है. तो यहां से हमने जो क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस किया था. ठीक है. सेक्शन 9 of the deal with the detail of local board and member of local board. Section 9 is all about the local board offices and the deal with the local board offices and the members of local board offices. A local board is constituted for each of the 4 geographical territories. जैसे कहाँ पे है अभी? Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. So where we have RBI 4 local board offices: Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. ठीक है. So which are specified in the first schedule of the act, shall consist 5 members to be appointed by central government. These members will represent as far as possible territorial and economic interest and the interest of the cooperative and indigenous bank. Okay? So the tenure of members of local board office is 4 years and can be reappointed for a maximum period of 2 years. Okay? आपका 11 section 11 removal from office. The central government may remove the office, governor or deputy governors or any other director or any other member of local board office. Very important. So ये जो हमारे गवर्नर सर हैं या जो डिप्टी गवर्नर्स हैं, इनको अपॉइंटमेंट भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशंस पर, और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जो भी आपके बोर्ड के मेंबर्स हैं उनमें से किसी को रिमूव कर सकता है by exercising their power mentioned under section 11 आपका. ठीक है. section 13 आपका meeting of the central board. तो ये हमने बात किया था at least 6 time in a year and once in a quarter. ठीक है. तो जिस पर हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, meeting of central board shall be convened by the governor at least 6 time in each years and at least once in a quarter. Sorry guys. So once in a quarter. The governor, or if or any reason he is unable to attend, the deputy governor authorized by the governor to vote for him shall preside at meeting of central board. In the event of equality vote shall have a second vote right or casting voting. ठीक है. ये भी हमने डिस्कस किया था. Section 17 business permitted to conducted by RBI. So जैसे आपका the businesses that can be undertaken by RBI include following: accepting deposit without interest from central state government, banks, local banks या others. ठीक है. जैसे होता है ना आपका we took under CRR and all. ठीक है. So that is part of this one. ठीक है. Section 18A validity of loan not to be questions. ठीक है. validity of loan not to be questions. ठीक है. So जहां पे आपका
notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, the validity of loan and or advances granted by RBI in pursuance of the provision of RBI Act shall not be called for questions merely on the ground of the non-compliance with the requirements of such other laws or any resolution, contract, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और अदर इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, अगर आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में ऐसा कुछ हो रहा है, यू कैन नॉट क्वेश्चन दैट पर्टिकुलर वन बाय यूजिंग एनी लॉ. ठीक है. सेक्शन 19, बिजनेसेस दैट आरबीआई कैन नॉट ट्रांजेक्ट. ठीक है, आरबीआई किन चीजों में आपका एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं हो सकता है, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 19. ठीक है, जैसे इंगेज इन ट्रेड, otherwise have a direct interest in any commercial, industrial or other undertakings. Purchase of shares of any banking company or of any other company or grant loan upon the security of such shares. Advances money on mortgage or otherwise on the security of or immovable property or documents of title relating thereto, or become the owner of immovable property except so far as necessary for own business premises and residences areas and all. Make a loan and advances, draw or accept a bill payables otherwise than on demand, allow interest on deposit and current accounts. ठीक है, this part is very very important. ठीक है, तो ये आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. प्लीज डू रिमेंबर दीज पर्टिकुलर वन. ठीक है, सो दीज आर द एरियाज वेयर आरबीआई कैन नॉट ट्रांजेक्ट. ओके, ये एक्टिविटीज आपका जिसमें आरबीआई आपका इन्वॉल्व नहीं हो सकता है एज पर द एक्ट सेक्शन 19. ठीक है, सेक्शन 20 चैप्टर 3, बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हम लोग जानते हैं. ठीक है, 21A आपका, ठीक है, बैंकर टू स्टेट गवर्नमेंट बेस्ड ऑन एग्रीमेंट्स. 22 इज रिलेटेड टू करेंसी, जहां पे 10,000 का डिनोमिनेशन का जो क्वेश्चन था दैट वाज. तो सेक्शन 22 आपका, जहां पे आरबीआई के पास राइट है कि जो आपका ₹2 नोट एंड अबव दैट विल बी प्रिंटेड बाय आरबीआई एंड signatory authority will be RBI governor and the maximum denomination can be 10,000. ठीक है, so RBI shall have sole right to issue bank note in India from the date of implementation of this section. The central government will cease to issue any currency note. ठीक है, तो उसके बाद आपका सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू नहीं करेगा. ठीक है, डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी सेक्शन 24. ठीक है, तो राइट इज गिवन अंडर सेक्शन 22 and the denomination is defined under section 24. So that is आपका जैसे 1,000, 5,000 and 10,000 maximum आपका. ठीक है, so that is the one. Section 26 legal tender, 27 reissue of note, 28 recovery of lost, stolen, mutilated or in imperfect notes. 29 currency note exempted from stamp duty. ठीक है, जिस हमने ये पॉइंट भी आपका डिस्कस किया था आपका. ठीक है, सो आरबीआई शैल नॉट बी लाइबल फॉर लाइबल टू द पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी अंडर इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक नोट issued by it. Section 30, power of central government to supersede the central board of RBI. This is again very important. ये section 30 थोड़ा सा इसको ध्यान रखें. So if the opinion of central government, the RBI failed to carry out any of the obligation imposed on it or under this act, the central government may be may by notification in the Gazette of India declare that central board to be supersede thereafter. ठीक है, मतलब ये जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है आरबीआई का, इसको रद्द करने का राइट है किसके पास? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, which is given under section 30, and they have to issue a notification in the government gazette. ठीक है, thereafter अब अगर रद्द कर दिया गया, कभी ऐसा हुआ, ठीक है, so thereafter the general superintendent and direction of the affairs of RBI shall be entrusted to such agency as central government may determine, and such agency may exercise the power and take all action as may have been exercised by central board of RBI. ठीक है, तो that is the one. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. एसेट ऑफ द सेक्शन 33, एसेट ऑफ द इश्यू डिपार्टमेंट्स, ये हमने डिस्कस किए हैं, आप इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा. ठीक है,
सेक्शन 48 आपका, ठीक है, एग्जम्पशन ऑफ आरबीआई फ्रॉम इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स आपका, ठीक है। सेक्शन 49 पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट। सेक्शन 59 आपका लिक्विडेशन ऑफ आरबीआई, ठीक है। सो नथिंग इन द कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई टू आरबीआई। आरबीआई शैल नॉट बी प्लेस इन लिक्विडेशन एक्सेप्ट बाय द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सच मैनर एज इट मे डायरेक्ट, ठीक है। सो मतलब लाइक कंपनीज एक्ट के प्रोविजन इसको लिक्विडेशन के लिए नहीं डालेंगे। ओनली दिस राइट बिलोंग्स टू लिक्विडेशन, मीन्स आपका जब हम उसको वाइंड अप कर रहे होंगे, बंद कर रहे होंगे, तो ये आरबीआई को बंद करने का डिसीजन सिर्फ और सिर्फ आपका किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होगा, ठीक है। फाइनल आपका पेनल्टीज, ये बहुत बार पूछा जाता है। So this chapter deal with various type of penalties which may be levied on any person or entity that breach the provision of this act. These include provision wrong information, failure to produce the required book and records, disclosure of any confidential information. Penalties for such breaches can extend from monetary fine up to monetary fine as well as up to 3 years imprisonment, ठीक है। तो 3 साल तक की सजा आपका जेल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आपका सारे सेक्शन जिनका एक समरी, थोड़ा सा आप इनको रिवाइज करें, पढ़ने में आसानी से समझ में आ जाएंगे, कोई इतना डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं है, बट रिवीजन इज मस्ट आपका इनके लिए। एंड आई विल इंक्लूड, जब हम आपका मॉड्यूल वाइज यूनिट वाइज जो मॉक प्रिपेयर करें, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस में जो आपको हेल्प कर देंगे, ठीक है। What is the maximum fee that RBI can charge for furnishing credit information? It is 25 rupees, ठीक है। कितना है आपका? 25 rupees, ठीक है। So on request of banking company, the RBI shall furnish the applicant with that credit information related to matter stated in the application. However, the information so furnished will not disclose the name of banking companies who have submitted such application to RBI. It is at the direction of RBI to levy fee for furnishing credit information. That amount would not exceed rupees 25, ठीक है। तो सिंपल सा आपका मैक्सिमम। Consider the following statement regarding Banking Regulation Act 1949. So now we will enter in second part of this particular unit, which is BR Act, and BR Act is all about the governance of banking system, ठीक है। जैसे RBI Act, जो RBI के राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, वो सब आपका RBI Act के अंदर है, ठीक है। एंड BR Act is like how RBI is going to govern all these the entire banking system और financial system, ठीक है। तो वो आपका जैसे बैंकों का सुपरविजन, रेगुलेशन, लाइसेंसिंग, एवरीथिंग दैट जनरली कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, ठीक है। So consider the following statement regarding the Banking Regulation Act 1949. The original act has 56 section, contain 5 parts आपका and 5 schedule, बिल्कुल 100% shoot, ये पहला statement. The act applied to all cooperative societies including primary agriculture societies. No, this is wrong, ठीक है। The act came into force from it is not applicable, BR Act is not applicable on cooperative societies and agriculture credit societies, ठीक है। They have their own different act, ठीक है। The act came into force from 16 March 1949. This is also true, ठीक है। तो हमें क्या ढूंढना था? True statement 1 and 3. 1 and 3 means option B will be right answer for this particular one, ठीक है। So Banking Regulation Act 1949, the law relating to banking in India today is the outcome of gradual process of evolution before 1949. The Indian Companies Act 1913 contained special provision relating to banking companies, which were inadequate and were subsequently incorporated in the comprehensive legislations passed in 1949. ठीक है, पहले जो businesses आपके manage होते थे, they are through Companies Act itself. But एक trading company means which is involved in buying, selling, एंड बैंकिंग कंपनी विच वर्क एज अ ट्रस्टी, ठीक है। इन दोनों के बिजनेसेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। उन डिफरेंसेस की जब हमको इस एक्ट के थ्रू मैनेज कर रहे थे, वो आपका कंपनीज एक्ट 1913 या लेटर 1956 या 2013 है, तो डिफरेंसेस आपके थे। तो आज के डेट में क्या होता है? कंपनीज, बैंक दे गेट रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट,
देन दे टेक लाइसेंस ऑफ फ्रॉम आरबीआई अंडर बीआर एक्ट, ठीक है। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस आपका चलेगा। सो द एक्ट वाज लेटर रीनेम्ड एज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, पहले इसको हम बैंकिंग कंपनीज एक्ट के नाम से जानते थे, ठीक है। नहीं, देन आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एंड suitably amended a number of time to insert new provision and to amend the existing ones in order to suit the need of the challenges this. It is not applicable on these two areas, ठीक है। तो ध्यान रखें इसका। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें, the structure of this act is divided into various section, each dealing with specific aspect of banking regulations, ठीक है। तो जिसमें आपका these are the sections, ठीक है। जैसे सेक्शन 1 टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट अबाउट दैट बीआर एक्ट, ठीक है। सेक्शन 2 आपका डेफिनेशन, ठीक है। सेक्शन डेफिनेशन ऑफ बैंक आपका, ठीक है, बीआर एक्ट के अंदर, ठीक है। 3 to 6 आपका एप्लीकेशंस, 7 to 11 कैपिटल रेगुलेशन आपका, 12 to 9 बैंकिंग ऑपरेशंस, 20 to 30 कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, 31 to 35 आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है। जैसे हमने पढ़े थे ना सेक्शन 29, according to section 29 of BR Act, banking companies they have to prepare their final accounts, where RBI have given the format for performa A balance sheet, form of balance sheet, performa B form of profit and loss account, ये सारी चीजें जो वहाँ पे दी गई थी। 31 से 35 आपका 30 is section 30 is related to audits, 30 subsection 1 subsection B is special audit, ठीक है। 31 आपका जिसमें you have to submit reports to RBI. 35 is about the inspections of on bank which is done by RBI itself in general public interest or even the bank own interest also, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपके जो प्रोविजन है, 36 to 46 स्पेशल प्रोविजन, मिसलेनियस आपका 56, ठीक है। तो ये अलग अलग सेक्शंस पार्ट्स में आपका जो ओवरऑल आपकी वर्किंग्स यहाँ पे डिफाइन की गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज not correct means incorrect as per the banking regulation act, तो प्रैक्टिस करते हैं इनको। bank are indirectly permitted to deal in buying, selling and bartering of goods, this is incorrect। bank are not permitted in this particular field, ठीक है। definition itself generally says this, a banking company cannot hold immovable property unless required for its own use for more than 5 years, this is more than 5 years नहीं, this is I guess 10 years, ठीक है। this is wrong, ठीक है। so this is also incorrect, तो ये सारी गलत हैं क्या। at least 51% of banking companies board of director must have professional or practical experiences in relevant field, this is true, ठीक है। हमें क्या ढूंढना था इसमें, incorrect, incorrect means 1 and 2, so A will be right answer for this one, ठीक है। So according to section 8 and 9, the bank cannot engage themselves in carrying the following activities, 8 and 9 of RBI Act, हाँ RBI Act में हमने उसको डिस्कस किया था। No banking company sell directly or indirectly deal in buying or selling bartering of goods or engage in any trade. No banking company shall buy or sell or barter goods for others. No banking company shall hold any immovable property, हाँ 7 years आपका, ठीक है। It is not 10 years, it is 7 years, ठीक है। 7 साल के लिए आपको 7 years। So this is आपका जो last statement था that was right, ठीक है। Next one, as per section 17 of BR Act 1949, before declaring any dividend, a banking company must transfer at least what percentage of its profit to reserve fund, ठीक है। तो ये आपका प्रोविजन है कि जितना भी आपने जो प्रॉफिट बनाया उसका एटलीस्ट 20%, ठीक है। सो एटलीस्ट 20% यू हैव टू ट्रांसफर टू रिजर्व फंड, ठीक है। एंड लाइक बिफोर डिक्लेयरिंग द डिविडेंड, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर द डिक्लेयरिंग डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर्स, ठीक है। सो दिस इज again this point is very important, so many time it was part of the examinations, ठीक है। Alright, so according to section 17, every banking company shall create reserve fund, yeah, statutory reserve fund, and before declaring any dividend, transfer to at least 20% of its profit each year, ठीक है। तो ये आपका एक सिंपल सा प्रोविजन जो रहेगा। नेक्स्ट वन,
Which of the following statement are correct as per RBI, Banking Regulation Act 1949? So the subscribed capital of banking company cannot be less than 50% of authorized capital. The subscribed capital of a banking company cannot be less than 50% of authorized capital. Okay. A shareholder can exercise voting right on a poll up to a maximum of 30% in the total voting right. A pull up of maximum 30. It is आपका initially 10% or something, then it is maximum 20% जाता है. ठीक है. The capital of a banking company shall consist only ordinary or equity shares. ठीक है. Correct है ना? क्या ओके, जस्ट आई हैव टू चेक दिस वन. 1 and 3 बी आपका 1 and 3. ओके ठीक है. हाँ, तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर राइट. दिस इज रॉन्ग, आई रिमेंबर दिस टू मैक्सिमम 25 और समथिंग. ठीक है. सो 1 and 3 आपका. ठीक है. सो जो इसके करेक्ट आंसर, प्लीज गो थ्रू दिस पर्टिकुलर वन. ठीक है. So 1 is correct. Section 12 of state that subscribed capital cannot be less than 50% of the authorized capital. So ये याद है ना, ऑथराइज कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल. ठीक है. ऑथराइज कैपिटल. सो ऑथराइज कैपिटल इज विच इज स्टेटेड ऑन योर एमओए. ठीक है. देन आपका इशूड कैपिटल विच वी जनरली इशू टू द पब्लिक. ठीक है. 6 years के अंदर आपको पब्लिक होना होता है बैंक को. ठीक है. तो अगर आप कभी भी ऐसे पब्लिक इशू के साथ आ रहे हो तो योर आपका सब्सक्रिप्शन, मतलब like let's say if your authorized capital is 10 crore, you'll go with at least 5 crore rupees issued capital, and it should be fully subscribed in that particular case. Incorrect आपका. Yes, because voting right of shareholders are initially limited to 10%, but the RBI may increases up to 20%. हाँ, this was the point. ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा था आपका? A shareholder can exercise voting right up to right on a poll up to a maximum of 30% of the total name. So initially it is 10%. It can be extended till 26% maximum. ठीक है. Statement 3 is correct, as the capital of a banking company must consist only ordinary and equity shares. ठीक है. So this is the overall provisions. Next one, guys. Yes. Okay. So ABC Bank Limited has several customer accounts and have remained inoperative. So we have some accounts, they are kind of inoperative from long time. As per the Banking Regulation Act, the bank is required to submit a return to RBI, Reserve Bank of India, regarding these unclaimed deposit. So unclaimed deposit जो आपके हैं वो. Additionally, the bank must transfer the amount for such account to a designated fund established by RBI within a specified period. So जिसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड्स के नाम से जिसको आपका जाना जाता है. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन इज, मिस्टर शर्मा had a fixed deposit that matured 12 years ago but was never claimed. The bank compliance officer, Ms. Mehta, is receiving the legal requirement under section 26 and 26A of Banking Regulation Act to ensure proper reporting and transfer of these funds. Based on the above scenario, which following statement or which will be the course of action for Ms. Mehta? So ABC Bank must submit a return of unclaimed account to RBI within 60 days after the close of the calendar year. So the unclaimed funds deposit amount should be transferred to depositor education and awareness funds. Okay, within 6 months from being identified. The unclaimed fixed deposit amount should be transferred to depositor education and awareness fund within 3 months. 3 months, and after 10 years from the after 10 years from the date of from the maturity date. Since Mr. Sharma fixed deposit was a term deposit, it will not cover. No, it will cover in this particular one. So C should be right answer for this one. As I can remember, it is 3 months, not 6 months. So एक बार देख लेते हैं. Yes, so it is
आपका ऑप्शन सी, ठीक है. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, एंड दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है. So in term of section 26, every banking company shall within 30 days after the close of each calendar year submit a written to RBI of all accounts in India which have been operated which have been operated upon for 10 years, provided that in the case of term deposit, the asset terms of 10 years shall be renewed from the date of the expiry of the term deposit. And in term of section 26A, the RBI shall establish a fund to be called Depositors Education and Awareness Funds, and shall credit to a fund the amount of such accounts will have not been operated upon a period of 10 years, or any deposit or any amount remaining unclaimed for more than 10 years within a period of 3 months from the expiry set of 10 years. ठीक है, तो 10 साल तक हम उनका वेट कर रहे हैं. After that, we are transferring those particular one to Depositor Education and Awareness Fund आपका, ठीक है. Next one, under the section 45ZA of the BR Act, how many persons can be nominated for deposit account held in bank, ठीक है. So earlier it is like आपका as per this one, बट रिसेंटली आरबीआई प्रपोज ट्रू नॉमिनीज, ठीक है. तो अभी आपका जैसे अगर आप अपने बुक को भी पढ़ेंगे ये एक ही है. आई एम नॉट श्योर कि वो आपका पास हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है. आई जस्ट चेक दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. सो बट इट इज ओनली वन नॉमिनी एज पर दैट पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है. So section 45ZA, where deposit is held by a banking company to the credit of one or more person, the depositor may nominate one person to whom, in the event of death of the sole depositor, the amount of deposit may be written by the banking company and payment by banking company to the nominee in accordance with section 45 ZA, ठीक है. एक बार इसको मैं देख ही लेता हूँ क्योंकि मुझे जितना याद है अभी कुछ दिन पहले देयर वाज अ न्यूज अबाउट दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है. Bank nomination amendment was there, 2000. So multiple nominee, the amendment allow bank to hold nominee up to 4 people, ठीक है. हाँ, तो अभी यहाँ पे आपका ये जो आपका that is the thing, ठीक है. 12 December 24, ठीक है. सो ठीक है. सो नाउ सी, अब यहाँ तक द रीसेंट अमेंडमेंट, ठीक है. अब यहाँ पे इन ऑप्शंस के हिसाब से कोई भी सही नहीं बैठता, बट हाँ द अमेंडमेंट सेज कि इट कैन बी अप टू 4 आपका, ठीक है. तो अब ये कितने हो गए 4. अब ये क्वेश्चंस का ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है हमारे लिए, ठीक है. सो अर्लियर इट वाज ओनली वन नॉमिनी, नाउ इट कैन बी अप टू 4 नॉमिनीज, ठीक है. सो प्लीज डू रिमेंबर दिस. हाँ आई मुझे थोड़ा सा मतलब न्यूज में दिस वाज इन न्यूज, ठीक है. सो नाउ इट इज up to 4 nominee as per the December 2024 amendments, right? Every bank must maintain a liquid reserve of at least dash of its total demand and time liabilities, NDTL जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, in India, in the form of cash, gold and unencumbered approved securities. So it is how much? 25%, ठीक है. 25%, हाँ 25%. Dash is a maximum percentage of demand and time liabilities that bank can require to maintain SLR. तो SLR का maximum cap is how much? 40%, ठीक है. तो है इसमें 25, 50, ओके. डी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए. यस, हाँ. So maintenance of statutory liquidity ratio, SLR, section 24 of BR Act 1949. Every bank shall maintain a liquid reserve of cash, gold and unencumbered approved securities at least 25%. Unencumbered approved securities means these are the securities which we haven't backed with any loan and all, ठीक है. ये ऐसे आपके पास these are the most liquid asset which you can easily convert into cash, ठीक है, जिनके अगेंस्ट में जिनको आपने कहीं पे प्लेस नहीं किया है, ठीक है. जैसे आपको कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी एंड यू हैवंट टेकन लोन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर वन, सो दैट इज जनरली कम्स अंडर दिस, ऑलराइट. Of the total of its demand and time liabilities, this is the section which determine the statutory liquidity ratio that bank must maintain.
It in term of the provision of this section, every bank shall maintain a liquid reserve in cash, gold, and approved government securities, not exceeding 40% of total of its demand and time liabilities in India. So basically, the range is 25 to 40. ठीक है? This is the section which determine the SLR that bank must maintain with itself. Right? Okay, this is it. तो दोस्तों ये आपका दो मेजर एक्ट एंड अगेन प्रोबेबिलिटी इज 1 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। कई बार वो आपका आरबीआई एक्ट से, कई बार आपका बीआर एक्ट से, कई बार वो आपको हाफ ऑफ मार्क के 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से जो देगा, ठीक है। मोस्टली जो अप्लाइड एरियाज होंगे उन पे ज़्यादा फोकस रखेंगे, मतलब जो आपके डे टू डे बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं। जैसे हमने आपका, जैसे आई सॉ दिस लास्ट क्वेश्चन इन प्रीवियस टू प्रीवियस एग्जामिनेशन, और आपका जो डिपॉजिटर्स अवेयरनेस जो फंड्स है आपका एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड्स, उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस आपके देखे गए हैं, ठीक है। करेंसी के ऊपर कई बार वो आपको क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरीके से जो आपको यहाँ से अगेन 1 मार्क्स, मैक्स टू मैक्स आपका 1.5 मार्क्स तक के क्वेश्चन, एंड मोस्टली क्वेश्चन लेवल विल बी टफ, हाफ मार्क्स क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको टफर साइड में लगेगा, लेकिन दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल। मॉड्यूल सी में हमेशा आपको ऐसा होगा, यू विल गेट 15 to 16 मार्क्स क्वेश्चन, बट विद दैट स्टेटमेंट बेस्ड एंड ऑल, ठीक है। पढ़ने में थोड़ा सा आसान लगता है, इजी लगता है, बट जब आप वहाँ पे फेस करोगे ना तो थोड़ा सा आपको ये चैलेंजेस आएंगे। चैलेंजेस नहीं कहूँगा मैं आपको, अगर आप थोड़ा स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आई विल सी यू टुमारो विद आवर यूनिट नंबर 23rd। ऑलराइट, so this is it from my side. Thank you for joining this session, thank you for watching this session. Bye bye, take care, all the very best, thank you.